Hi team, if you can check it out, if it's live on YouTube, that's going to be great help. Okay, good. ठीक है, let me just check. Yeah, just a second. And मस्ती तो करेंगे पर कुछ ना कुछ सीख के भी जाएंगे इनसे. ठीक है, डन है. एक सेकंड रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए. Give me a second. Admin, if you can call me, that'll be great help. Live, yeah, YouTube live is on. I think YouTube live is on. ठीक है भाई, आगे. So Megha ma'am may join us from SC Michadi, Krishna sir may join from IIM Bombay, and Anisha हमारे साथ रह ही रहे और बहुत ही मजेदार सेशन. अगेन आपको इनसे एक्सपीरियंसेस के साथ सीखना है. सब लोग ने स्लाइड्स लेके आए हैं, अंकिता मैम भी, और मैं कुछ नोट्स भी अगर शेयर करूंगा आपके साथ, वो पर डिस्कशन करेंगे. ठीक है. Let me just check with Moinack sir, Ankita ma'am, and Sahil sir. Sir, are you there? If they're, just switch on the camera, that'll be great help. Yeah, Moinack sir, if you're live, if you can switch on a cam, and Sahil sir, as well as Ankita ma'am. Hi Ankita, how are you doing? Hi sir, all good. Hi everyone. क्या बात है. Great यार. Ankita ma'am joining in from IIM Ahmedabad. Anisha ma'am is an NMIMS topper with us. And Moinack sir. Hi everyone. Hi Moinack, hi Anisha. Hi everyone, welcome on board. Okay, great. Hi Sahil sir, क्या हाल चाल है? Hi sir, I'm good. How are you? Very good, very good. Boys and girls, please welcome Sahil sir. Anisha ma'am, Moinack sir का नाम चेंज करना है. ठीक है, great. Hi Sahil, good seeing you man. Sahil is one of the that toppers. Also Sahil sir CAT देने जा रहे हैं भाई इस बार. Sahil sir हमारे वो गुप्त सूत्र को जिनको हम हर बार भेजते हैं CAT के लिए, जो मेरा एनालिसिस होता है उसके अंदर Sahil sir का भी हाथ रहता है. पर ये बोल देते हैं सर CAT बड़ा इजी था, CAT बड़ा इजी था. Sahil sir, I'm going to take it with a pinch of salt इस बार, जो आप मुझे बताएंगे. Definitely sir, definitely. Great. Let's just check with Moinack if he can hear us. Moinack is not keeping well. He's gone through surgery, but let's just check with Moinack. Yes. Hello. Hi Moinack, how are you doing, man? Good, sir. How's everyone? Very good. This session is going on YouTube live as well. Boys and girls, do it on the like button on YouTube, and FMS, IIM Ahmedabad, ZAT toppers, and also NMIMS toppers are all in here. And this session is going to get heated up today. हाँ, थोड़ा गर्म करेंगे इसको. इन सबसे inputs लेंगे. यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ इनमें से जो उसकी मॉक्स के अंदर कभी नंबर नहीं आ रहे थे, और जिनके नंबर्स नहीं आए वो भी अपन डिस्कशन करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं. और एक इंसान है मोइनैक साहब, जो कि वर्बल का भी फाड़ रहा है बैठ के, और मेरे पेट पे लात मारा और बच्चों को बबल पढ़ा रहा है अभी आके. Moinack shoulder is not keeping well, but he's standing strong with us. Moinack, all the best for speedy recovery. Thank you, sir. Thank you, everyone. Great. Superb. Great. All right, let's start. Let's start with Ankita. Ankita ma'am, D-Day strategies. Boys and girls, मेरे पास पूरा presentation है, but I think we're going to do chit chat today more than writing it up. हाँ, आज हम सिर्फ एक स्लाइड के लिए मैं I'll just touch base on NMATs of the world. मेरी स्लाइड एंड में आएगी. 3 बातें बतानी है आपको, बहुत अमेजिंग है. साहिल सर की स्लाइड रेडी है, सुधांशु सर की स्लाइड रेडी है, सबकी स्लाइड है. विश्वदीप सर ज्वाइन करेंगे, बहुत बड़े लोग हैं. बट एक एक करके बातें करते हैं, एंड आई विल टेक सम नोट्स एज वेल एंड कीप रीइटरेटिंग व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट, और लास्ट दिन में क्या करना चाहिए. नियरली 24 to 48 hours of before CAT. Mind game is everything, and these guys have done it before. How they have done it, what went right on those 2 hours of paper, वो इनसे हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. हाय अंकिता, क्या हाल चाल है? Hi sir, all good. अंकिता जी बताइए, how was your D-Day strategy? इस टाइम पे तुम 3 साल पहले क्या कर रहे थे? When you 4 साल पहले when you gave your CAT, what were you doing right now, and how was life there? Maybe 5 years back, but yeah. So I think right now, at least on Friday night, right? Nothing. I did not do anything major, I would say. I think came back from my office and I was just thinking on what to do on the next day. So what basically I did was, on like 1 day before the CAT, I was just revising all the formulas, all the questions which I had marked, or all the pointers which I had noted down that I need to keep in mind on the exam day, right? So that these are things which we have made mistakes in the mocks, or which we have seen others making, but something which we do not realize it. So I used to just go through it, that I don't repeat it on the CAT day, because that was the most important day we are preparing for, right? So I spent a few hours just revising all of these things, and the next few hours was just relaxing, keeping calm, watching a movie, or actually I was watching a web series at that time. So I just used to watch the web series. I talked to my friends and just prepared for the next day, the logistics and everything, that
admit card is like, kept properly. All the documents are in place. I just double checked on the timings of like the slot timings for the exam, etc. So those are the things which I did one day before the exam, I would say. And of course, on the day was a different ball game altogether. But that is what I did on Saturday. मेरे को अंकिता अलग लेवल पे पसंद है. अंकिता की मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे थे. बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इससे. अंकिता, प्लीज टेल अस कि मॉक्स के अंदर व्हाट इज द हाईएस्ट. अरे सेशन इज गेटिंग हीटेड अप राइट नाउ. वी आल्सो हैव प्रांतिक जॉइनिंग इन फ्रॉम IIM Lucknow. वी आल्सो हैव तुषार सरकार जॉइनिंग इन फ्रॉम IIM कैलकाटा. तुषार ने हमारा नमक खाया और पालक पनीर भी खाया. उसके बारे में बात करेंगे. हे तुषार, क्या हाल है? बढ़िया चालू है सर. बहुत ही बढ़िया. बहुत. तो यू आर इनसाइड द IIM कैलकाटा कैंपस राइट नाउ एज वी टॉक. यस सर, जो का ये पर्दा खुलते ही सुबह लेक्स दिखेंगे. अरे क्या बात है भाई, ये तुम्हारी मोटिवेशन आ जा. मैनिफेस्ट कर लो बैठ के. और जो कैटकिंग फैमिली के स्टूडेंट्स हो, अगली बार इस साइड पे अपने को रहने का, समझ आ रही है? यू वुड बी ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल. मैं इनफैक्ट मैं लास्ट सेशन में दिखा रहा था, तो तुषार घर पे आया, तो वी हैड पालक पनीर. आई वाज हैविंग पालक पनीर टुडे इटसेल्फ. व्हाट मी एंड तुषार हैड. इट वाज फन डे, राइट तुषार? यस सर. सुपर. अभी भी पालक पनीर ही मंगाया सर, इसलिए याद आ गया, तो अभी खाऊंगा मैं. ग्रेट है, ग्रेट. प्रांतिक सर इज जॉइनिंग फ्रॉम IIM Lucknow. हाय प्रांतिक, क्या हाल चाल है? Lot of people have joined. Hi, hello guys. क्या बात है, क्या बात है. गुड. तो बॉयज एंड गर्ल्स, IIM Lucknow, that toppers, FMS, IIM Ahmedabad, part of all CATKing family, IIM Calcutta, here to help you out. अंकिता मैम से स्टार्ट कर रहे हैं. अंकिता मैम के मॉक्स में नंबर नहीं आते थे. अंकिता मैम बताइए अपना स्टोरी. हाईएस्ट कितना क्या होगा? यू यूज्ड टू गिव द 3 hours वाला कैट आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले. बताइए. और उसका फिर व्हाट वेंट राइट कि वहां जाके तुम्हारा IIM Ahmedabad हो गया. So I don't know what went right, but I think when I like during my time, I got a score of around 150, 152 to 155 on the final day. While in mocks, I could not score that much in the full length mocks, right? I scored like around 120 in one of the mocks. Other mocks, I could not score more than 100, I would say. So my full length mocks did not go well, but that did not mean that I stopped my preparation, right? So I used to still prepare. I used to focus on what is not going wrong. I used to give sectionals to identify the weaker areas and make my fundamentals strong. So I think mocks do not define everything on what you will score on the final day. How you have prepared through the months, through the last 6 months, 11 months, 12 months, whatever you've prepared for, I think what matters, and how your mindset is on the CAT day is what matters. Does not matter whether you've scored high or low in your mocks previously. No, nothing to demean Ankita, but Ankita 99 कभी मॉक में टच हुआ तो सच्ची बता देना. 99% I think so. मॉक्स में कभी टच नहीं हुआ तुम्हारा. Oh, lovely. And overall this girl is 99. A lot of people actually get 99%. I've not heard a lot of my friends also getting like a 99% in mocks consistently. They might have got it in like 1 or 2, 3, 4 mocks, but not consistently. So everyone has their own ups and downs in the mocks, and that is, I think, the purpose of the mocks also, right? To test you in different scenarios. Superb. So boys and girls, keep working hard on that day. मैं हमेशा बोलता हूँ 80 percentile और 90 percentile में सिर्फ 3 सवाल का फर्क है. वो एक सवाल होगा पूरे वर्बल सेक्शन में से, मे बी 1 पैराजम्बल जो आप तुम ठीक करोगे. वो पूरे एक सेक्शन के अंदर से एक DILR का एक सवाल पूरा सेट नहीं, और पूरे एक क्वांट सेक्शन के अंदर एक सवाल पूरा का पूरा सेट नहीं. तो भाई that's it. And the 3 questions are going to jump from 90 to 95 and 3 questions from 90 to 99 as well. और 99 to 99.99 ऑल इंडिया टॉपर एज वेल. तो 3 सवाल की गेम है. अगर आपके ठीक हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है. तो जो लोग होप छोड़ना चाहते हो, अंकिता मैम तुम्हारा रोल मॉडल है. और अंकिता, होता है उस दिन पे नहीं आते और उस दिन पे आ भी जाते हैं. Some people out of stress, out of anxiety, I'm going to keep इस सेशन का माहौल बड़ा लाइट बिकॉज एग्जाम सिर पे है, और हम कोई भी ऐसे बम नहीं फोड़ने वाले आपके सिर के ऊपर, बिकॉज अभी मूड एकदम चिल चाहिए. और अगर चिल मूड नहीं रहा तो तुम बर्बाद हो जाओगे. राइट अंकिता, यू डू नो एनी पीपल हु कुड नॉट मेक इट, और वर यू स्ट्रेस्ड ऑन दैट डे? तेरे को स्ट्रेस था कि चिल था? Stress definitely था, but I think the thing which I believed was that whatever I've done so far, I could not have done more. I've given my best in my preparation as well. So stress definitely रहता है, and वो stress होना जरूरी भी है, because I think बहुत ज्यादा आप चिल रहते हो तो आप चिल में एग्जाम दे के निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा. तो थोड़ा stress रहना is also important, but the thing is that in that stress, in that panic mode, you need to be sure that while you're giving the exam, you do not transfer that energy there.
राइट जितना एनर्जी आपका पैनिक है बाहर छोड़ दो एग्जाम हॉल के बाहर अंदर में इट शुड नॉट बी दैट अंदर में इट इज जस्ट a matter of those 40 minutes divided into 3 sections, right? Like 2 hours divided into 40 minutes of 3. It's like 40 minutes का आपका एक पेपर है वो पेपर दिया खत्म दूसरे पेपर में जाओ आप एंड जब वो आप पेपर दे रहे हो मतलब बहुत सारी चीजें आप सोच के आते हो कि मतलब यू नो ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे करना ही है ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है हो सकता है नहीं आए वो क्वेश्चन हो सकता है whatever you have thought do not work on that day, right? So you need to be flexible with whatever strategy you have built in. So strategy concrete mat rakhna and just ensure that you have your fundamentals in place and these are 3 papers which you are giving and I'm sure school mein sabne diya hai back to back papers in their school days. Just believe that these are also 3 papers which you're giving essentially. क्या बात है, ग्रेट ग्रेट. जस्ट टू रेक्टिफाई, अंकिता जो अपने स्कोर बता रही है ये अपना वो 100 नंबर वाले में से बता रही है 150, ठीक है? ये 100 इंटू 3 300 कमेंट आ रहे हैं. ओ 120 कैसे? 120 तो मेरा आज तक नहीं आया, इसका लोएस्ट था. ओ भाई ये इसका था वो 300 नंबर वाले पेपर के अंदर जब 3 घंटे का पेपर होता था. समझ आ रहा है? तो दोबारा मोटिवेट हो जाओ. ग्रेट यार, दैट्स लवली. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी अंकिता. आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू. Let's go to Moinack, the big guy here. Moinack has gone through a shoulder surgery. Moinack, thanks for coming on board, ma'am. This is really, really lovely to आज के दिन हमारे साथ 3 घंटे हो गए बैठा हुआ है and share कर रहा है. Moinack sir, over to you. Yes, sir. So firstly, hello guys. I think right now we are there on YouTube live, but most importantly, my favorite batch is here. I think इनको sir 1857 batch बोलते थे, which is something I learned from these guys only. बिल्कुल. And lot of good memories over the last 1.5 months that we have interacted live on class. And ये सब सर बच्चे ना रेडी हैं. तो मुझे पता है जितने हमारे साथ एसोसिएटेड हैं जो यूट्यूब से भी आए हैं, यू गाइज आर रेडी. ओके, आई थिंक मुझे जितना बोलना था I have already communicated most of it, but concisely the main thing is, as Ankita ma'am just mentioned, it's all about the mindset now, right? आप लोगों का mindset ready है. CAT कोई बड़ी बात नहीं है. 26 November is just another mock that you're going to take at the slot, right? Like we've practiced over the last month. So nothing to take a big load of. कोई बड़ी बात नहीं है. आपको पता है आप 3.5 लाख लोगों से compete करने नहीं जा रहे हो. You are just going there to compete with yourself, right? It's your prep against you. Okay, in the sense of the paper, it is of course going to support you. तो नंबर आ जाएंगे, उतना कोई लोड नहीं है. And strategies are all in place, nothing to worry. VRC ready हो, question paper mode use करना आता है. LRDI आपको पता है, CAT surprise करेगा. जितना surprise करना है कर ले. हम process oriented लोग हैं. We are going to follow our process, right guys? You guys know what the process is that you need to follow. Pranthing has taught you all year, right? And we have applied all those things in the PYQs. Everything is set in that manner. डरना नहीं है. 2 सेट हो रहे हैं तो 2 सेट हो रहे हैं. अगर मुझसे 2 हो रहे हैं तो दूसरों से 1.5 हो रहे हैं. यही माइंडसेट रखना है आपको, right? Now it's about the winning mindset, the killer mindset, जो Michael Jordan very famously says, right? When you're at the finish line, just do it. Quant, you know, very importantly, the round robin approach definitely helps, but the most important thing is don't carry anything forward. Okay, section खराब गया तो गया. Pick it up in the next section, right? I've shown you guys my scorecard also in the last class that we met. So very importantly, I showed you, right? वो 299 और एक 93 भी होता है, तब भी overall 99.7 आ जाता है. Okay, it's absolutely fine if one section is not up to your mark कि अरे कुछ हो गया, you still have the other section to cover it up. Not a problem at all. Rest guys, hygiene factors याद रखना है. Have to be on time, right? No talking to anyone in the in those 2 hours or before that, right? अपना notepad बहुत अच्छे से use करना है. Remember, you may or may not get an extra one, but keep the worst in mind, right? Yes, mama mindset जैसे यहाँ पे लोग रख रहे हैं sir. That is something we had practiced. One of my favorite basketball players, Kobe Bryant, used to use it. Really, really helpful. Okay, so use that in mind. Okay, be neat with your work. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि question 1 में कुछ use किया हुआ चीज question 5 में use हो जा रहा है, but 2, 3, 4 के बीच में आप भूल गए, अरे 1 में क्या किया था. So just be very neat. You know, it's just 30 seconds can matter a lot. And I think Tushar, the example you shared in the last class, ये मेरे साथ भी हुआ था. तो एक लॉग का क्वेश्चन था, मैं उसको गलत मार्क करके आ गया. इट वाज ऑप्शन डी. मैं हर करेक्ट निकाला है, बट वो लास्ट के मिनट में इतना टेंशन हो गया, सी मार्क करके आ गया हूँ, या फिर सी करेक्ट था, डी मार्क व्हाटएवर इट इज. तो +3 का माइनस वो हो गया, 99.71 आया. अदरवाइज इट वुड बीन 99.82.
And maybe शायद अंकिता के साथ IIM अहमदाबाद जाता instead of FMS, a different red building. But definitely FMS was a great journey. But I'm just saying that one question in the last minute of energy can define a lot of things for you guys. बिल्कुल ठीक बिल्कुल Moinack, very well said. Just a quick thing, boys and girls, people who are listening to us, the stream is getting hotter right now. We also have Biswadip Sir joining in with a CMAT rank. Sir 9, 10 मैं हमेशा भूल जाता हूँ. 9. CMAT rank 9, quant 99.99 percentile verbal ability, sorry, quant 99 percentile in CAT as well यार. This is so amazing. विश्वदीप सर को हम CMAT के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे, पर आज हम CAT की बात करें तो आज इनका CAT का एक्सपीरियंस लेंगे. This is so amazing. भाई जो लोग YouTube फैमिली में ज्वाइन करो, स्ट्रीम और गर्म होने वाली है, अभी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं. लाइक पक्का कर दीजिए, गोना बी ग्रेट हेल्प. तुषार बड़े प्यार से बोलते, तुषार लाइक कर दे यार, तू तो स्ट्रीम के इस साइड पे इस चेयर पे बैठ चुका है. आज अरे लाइक कर दो. मैं सर उस साइड पे भी था, आपके वहां के उस चेयर पे भी था, अभी चेयर पे भी. लाइक कर दो यार, यही चाहिए तुमको. अभी पढ़ाई से नहीं होगा, अभी सिर्फ यू नीड टू गेट सम लाइट मोटिवेशन. दैट्स इट. Superb, great. Tushar, your story यार. Tushar comes from a really amazing background. Final year बच्चा, fresher, कॉलेज के साथ साथ क्रैक किया. जो लोग डरते हैं कॉलेज के साथ होगा नहीं होगा, आज हम प्रिपरेशन टिप्स नहीं मांग रहे. तुषार यार, तू भी IIM कैलकाटा से सेशन कर रहा है. क्या था तेरा माइंडसेट व्हेन यू वर गिविंग कैट? व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग? प्लीज शेयर योर आइडियाज एंड वी गोइंग टू गो टू IIM Lucknow, प्रांतिक सर, विश्वदीप सर एंड साहिल सर एज वेल. सर तो एक चीज व्हाट आई पिक्ड up from that entire journey and CAT के दिन that was very crucial for me is that whenever lectures में आप लोग कुछ भी बोलते थे, throughout everything अपने आप humans pick up some things intuitively. वो instinct बन जाता है. तो CAT में whenever you see something that you might have not seen before, some things just associate. So associative memory का and a few other things come into play. Daniel Kahneman का एक book है, तो I was reading that as well. तो you have some things, तो तुम लोग को भी नहीं पता तुमको आता है, बट आता है. एंड एट दैट मोमेंट इट शाइन्स. तो वहां पे जाके पेपर अच्छा आया बुरा आया, वहां पे वो पैनिक नहीं करना है, बिकॉज इफ यू नो कुछ भी करके उसको कितना भी घुमाया हुआ है, आएगा ही सही जगह पे. दैट इज द वन थिंग दैट वाज वेरी क्रूशियल फॉर मी. अपार्ट फ्रॉम दैट VRC मेरा एक्सपेक्टेशन था बहुत हाई, ये अच्छा करना ही है, बिकॉज मॉक्स में दैट वाज मेरा बहुत अच्छा जाता था. बट पेपर में ऐसा हुआ कि आई वाज नॉट एबल टू स्कोर वेरी वेल वहां पे, एंड पेपर के टाइम आई न्यू इट. तो वहां पे VRC छोड़ दिया. मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हुआ, तो वो छोड़ दिया. जितना हुआ किया अच्छे से, नेक्स्ट पे गया. DILR जहां पे मुझे सिर्फ ये सेक्शनल पार करना था, वहां पे यही इंस्टिंक्ट्स किक्ड इन एंड आई स्कोर्ड 99.55. एंड मैं बहुत बार बोला हूं सर आपके साथ, वहां पे भी बोला मुझे 0 मिलते थे मॉक्स में उसमें. तो थिंग्स कैन चेंज उसी मिनट पे व्हेन थिंग्स स्ट्राइक. तो वो स्ट्राइक करवाना है, एंड वो स्ट्राइक नहीं होगा अगर पैनिक किया या फिर कुछ ये किया. कुछ नहीं आ रहा है, टेक अ डीप ब्रेथ, थोड़ा सा पानी पियो ताकि वॉशरूम ना जाना पड़े, एंड लगे रहो. क्वांट्स में भी एकदम सिमिलर है. कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है. बहुत बहुत बुरा लगता है उसके बाद, हो जाने के बाद भी बुरा लगता है कि यू डिड नॉट रीच योर पोटेंशियल. तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है. Super. This is so amazing. By the way, I was just checking our YouTube live. This is Tushar's YouTube live. मैंने ये thumbnail बनाया था. तुषार 30 के views है उसके ऊपर, वायरल जा रहा है. And this is Tushar sitting on the same chair right now. And play नहीं हो पा रहा है. But yeah, this was the video done. पता नहीं तुम्हें दिख पा रहा है कि नहीं. But yeah. How do you gain insight? चल रही है. But nevertheless, so this was Tushar there, and now Tushar is sitting inside the school at IIM Calcutta. Okay, this is Tushar sitting down here. This is so amazing. It's very nostalgic, yaar, Tushar, and keep the CATKing flag high wherever you are going. We were having fun, so yeah, it was so much of fun. So nevertheless, so yeah, Thank you so much, sir. Thank you. So मजेदार life है यार. Tushar, thanks for the input, यार. Means a lot. That's lovely. Great. Thank you so much, तू फाड़ेगा यार, आगे भी फाड़ेगा. अभी कॉलेज के अंदर छक्के मारा और तेरे जूनियर्स आ रहे हैं अभी IIM कैलकाटा के अंदर. अभी आगे चलते हैं. विश्वदीप सर इज लाइव राइट नाउ, देन वी गोइंग टू क्विकली गो टू साहिल सर एज वेल. सो विश्वदीप सर, आपने कैट भी फाड़ा है, सीमैट तो ऑल इंडिया टॉपर रहे हैं. व्हाट डज इट टेक टू बिकम अ टॉपर? एक टॉपर माइंडसेट क्या होता है? मेरा तो सिंगल डिजिट रैंक कभी नहीं आया बाय द वे, बट व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Like I took the other exams as well, and one different thing that I did, मतलब अगर मैं CMAT की बात करूँ specifically, कि मैंने वो वाले एग्जाम में कोई प्रेशर नहीं रखा था. Like I went with a free mind, no pressure at all. Like I think I was the most calm in as compared to the other exams. सबसे ज़्यादा काम मैं CMAT में था. So that actually helped me a lot. So considering जितना ज़्यादा आप काम रहोगे, आपका दिमाग उतना अच्छे से चलेगा एग्जाम के दिन. And it's very important that you are completely focused in those 3 hours or 2 hours right now. जो अभी है, मेरे टाइम पे 3 hours होता था.
So एक section जैसे ही खत्म हो गया, you are not supposed to be thinking anything about that section. It's already gone. Your complete focus should be on the next section, next question that you're doing. And similarly, when you go to the quant section, सारा focus जो है quant section पे होना चाहिए. Like मेरा example अगर मैं CAT का दूँ तो with respect to DILR, I was a bit taken aback. 20 मिनट तक मेरे से कोई question नहीं हुआ था, and I was panicking. I remember that specifically. But then as soon as quant started, मैंने पहले 2 सवाल देखे and I was like, ये as compared to the entire paper, this has come the easiest. So I ensured कि इसमें सबसे ज़्यादा questions मैं solve करूँगा. So that is how you need to like improvise during the exam. आपको ensure करना है कि you are assessing the difficulty level and उस हिसाब से you prepare your entire paper. So all the best to everyone. Just make sure कि you are calm throughout the paper. Don't think about anything else other than the question that's in your hand. And while you are also doing the rough work and everything, just like Moinack mentioned, कि उसको जितने अच्छी तरीके से करोगे आपका ही फायदा होगा, because you will have to go back and forth, especially in DILR. So keep that in mind, and all the best to everyone. क्या बात है, so amazing यार. साहिल सर के बाद बात करते हैं. साहिल सर 2 दिन रह गए. साहिल सर ने तो पूरी पीपीटी वगैरह बनाई हुई है कुछ तो साहिल सर, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? साहिल सर वो क्लास के बच्चे होते हैं ना, डायग्राम बना के आते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. तो साहिल सर, शुड आई पुल इन अ डायग्राम? आपकी प्रेजेंटेशन है आज तो मेरे पास. Yes sir, yes sir, yes sir. Okay, great. तो साहिल सर डायग्राम बना के आए तुम्हें मोटिवेट करने के लिए और जर्नी बताने के लिए. एंड Moinack and Prantik, we're going to come to you soon. You can also add in. Now it's an open house, and I'm not going to go to one and Yeah. one. People on the chat are also talking to us, and I'll have one slide also, which is only 3 points, which we'll discuss soon. Let's go to Sahil sir. Yes, sir. All right. Okay, so I think this is like that batch. I think जिनके साथ पे काफी देर से पढ़ाई चल रही है, and I think now it's the time where we are in the final lab, guys. तो ये है वो final lab जो आपको दिख रहा है सामने. Right. So I'll start with VARC. I think one of the thing which I believe in might work for someone, might not work for someone, is like before I actually go to the exam, I always read a small article before my slot. What it does is it actually starts making a mind map, और थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, I'm on the track. I need not to take those 2-3 minutes extra just to understand what is happening in the RC, right? Because I think थोड़ा सा पढ़ के जाऊंगा तो मुझे चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी. That's what I do. Second thing I think is that's like very, very important. Strategies, different strategies work for different people. Not the same strategy will work for everyone. So if you feel that you can pull off 4 RCs first and then go to VA, that's good for you. If you feel VA first, RC second, good for you. If you feel RC, VA, RC, good for you. Okay. But the thing is, no strategy is bad strategy. No strategy is good strategy. Every strategy is your own strategy, but it should give you marks, right? So जो strategy आपके लिए work कर रही है, go with that, and I think you'll nail that part. But yes, who can tell better about VARC than Rahul sir and Moinack sir? So any parting thoughts, sir, on this one? तू बता यार, तू टॉपर आदमी, तू क्या बट जस्ट टू ऐड ऑन, ये बहुत सही बात बोली है साहिल. थैंक्स फॉर दैट यार. भाई सुन लो, कई लोग पहले आरसी कर रहे हैं, कई लोग पहले बीए कर रहे हैं. मैं इनसे पूछ लेता हूँ, यहाँ पे तुषार भी बैठा हुआ है, मोइनैक भी बैठा हुआ है. कई लोग पहले आरसी कर रहे हैं. वर्बल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, पहला सेक्शन है भाई, ठीक है? वो इट्स लाइक योर स्टार्टिंग ओपनिंग बैट्समैन ने अगर मार दिए 100, तो अगर अपना जैसे 10 मैचों में हमारे साथ हुआ है, इंडिया वाला हाल मत करना, फाइनल में जाके ठुक गया, मॉक्स में नंबर आ रहे थे और ऊपर जाके हो गया. हाउ मच एवर आई लाइक इंडियाज टीम, बट लास्ट डे का परफॉर्मेंस में उस दिन तो इमोशनली मैंने बोल दिया कोई गल नहीं, पर बाद में लगा है तो बुरा तो खेले थे. तो राइट, तो पहला अगर जाके वर्बल सेक्शन में अगर तुमने एक 6 मार दिया तो लाइफ इज गोइंग टू बी गुड. सो तुषार, व्हाट यू यूज्ड टू डू? पहले आरसी फिर वर्बल के उल्टा, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? तो आरसी पहले एंड देन वर्बल यूज्ड टू वर्क फॉर मी. तो आरसी पहले मेरा टारगेट था कि जितना हो सकता है करना है, एंड वर्बल में आई यूज्ड टू स्टार्ट विद पैरा समरी, क्योंकि उसमें 1-2 आसान तो मिल जाता है और ऑप्शंस रहता है. So that was how I went about it. Okay. थोड़ा नेटवर्क तेरा चॉपी तुषार. I'm going to come back to you. Moinack से बात करते हैं. Moinack, watch. We don't want them to change the strategies, but any thoughts on this? Typically, even I am a person who prefers RC first and then VA. Simple logic है कि RC के questions ज़्यादा है, तो you can score more in them in momentum. So that is what we prefer. But overall, with all the batches, we have discussed net 15 correct strategy. कुल मिला के हमने 42 नंबर लाना है.
तो आई थिंक सबको यहाँ पे याद होगा कि वो कैसे करना है. So the attack points would be RC. Okay, if you want to miss out on those double negative questions जो थोड़े confusing होते हैं, you can skip them out and compensate that with FIBs, PJs and parasummary, right? But overall, sir, I believe अगर FIB and PJ पे capture हो जाता है, and if you get those 15 to 18 marks from there, then that's going to be a brilliant boost. Right. वो काफी जबरदस्त होता है. I tell them simple math है भाई. वर्बल की बात हम 2 मिनट के लिए कर रहे हैं. सिंपल मैथ है. एक आरसी और 4 पैराजम्बल पैरासमरी हो गया तो 90% तो पक्का क्रॉस है. साइन बाय ब्लड कोई पेपर उठा लो. एक आरसी 4 पैराजम्बल पैरासमरी, ये वाला पार्ट खत्म. दैट्स इट. एंड यही तुम 2 आरसी करते हो और वो 4 के अगर 8 पैराजम्बल पैरासमरी सॉल्व होते हैं, यू आर ऑल इंडिया टॉपर, व्हिच इज लाइक 16 क्वेश्चन राइट. ठीक है. अगर बीच में रह जाते हो, 2 आरसी कर ली और पैराजम्बल पैरासमरी सिर्फ 4 दिन को, एक दो मुश्किल आते हैं. बट नो नेगेटिव है वहां पे, तो जो नो नेगेटिव वाले तो करने ही करने हैं. तो जितना तुम ज्यादा करना चाहते हो वर्बल के अंदर वो करो. जो स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए वर्क कर चुकी है, हमारी बातें सुनिए पर करो खुद की. डोंट चेंज व्हाटएवर यू हैव डन सो फार. एंड पीपल आस्क मी सर आज तो कोई स्ट्रेटजी काम ही नहीं हुई भाई, नंबर कभी आए नहीं है यार. तो यार सिंपल बात है, अगर आपके नंबर नहीं आए हैं, जिसमें नंबर आए थे उसी को फॉलो करो और आगे जाओ. ठीक है, डन है. ग्रेट. हाँ साहिल सर, दिस इज लवली. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, मूविंग ऑन टू दिस. या हम पहुंचे थे यहाँ पे. I think again we'll discuss about DILR also. So I'll just quickly start with what I have on the on this presentation. I think one of the main things which I always feel is when you're done with VARC, you're done. That's it. Okay, your exam is logged. You can't go and change it. So that means you don't have to like keep thinking what you have done in VARC. ज़्यादा हो गए, कम हो गए, गलत हो गया होगा. You cannot tell like VARC में हो सकता है आपको फील आ जाती है, बट इतना स्ट्रांगली आप नहीं बोल सकते गलत हो गया या सही हो गया. So it's done now. Okay, so now it's all about DILR, and when you go into the DILR, I think it's very, very important for you to choose the initial set wisely. Okay, because that will give you the confidence, and I think it's a very good strategy to make sure that your 15 marks are sorted in like first 15 minutes, because then you are almost and above that 90 percentile. Okay, and once you are above that 90 percentile, there are a lot of people who will think DILR as a part जो उनको sectional cutoff clear करने के लिए चाहिए, because they might boost their scores in VARC and QAs. But there are some people who might think DILR उनका बहुत strong है. Okay, but in both the cases, this 15-minute 15-mark strategy will work, because anyways you're gonna get your sectional cutoffs clear. Okay, now it all boils down to the second and third set, because we don't know अभी तक 4 set आ रहे हैं, 5 set आ रहे हैं. Based on the previous year, it might happen that 4 sets will come, but suddenly you see like in the first slot 5 set आ गए, तो घबरा मत जाना. Okay, आपका strategy वैसा ही होना चाहिए, but ठीक है, you can like थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, but you need to make sure that you are on the right track. If you feel during the exam that DILR is like, oh my god, it is tough, so it's not tough only for you, it is tough for everyone. Always remember that. DILR में कई बार हम लोग अपना मोरल डाउन कर लेते हैं, but you need to make sure it's tough for everyone, it's not only tough for you. And what I always believe is any section, first 5 minutes and last 5 minutes are very, very important. Okay, इसमें भी आप अगर last 5 मिनट ऐसा करेगा तो भी, वो मेरा पॉइंट था, ऐसा करेगा तो भी. ओके, हाँ, सो लास्ट पॉइंट जो है इसका वो सर कवर करेंगे. नहीं राहुल सर, एक चीज जरूर बोलूंगा कि यू नो जस्ट टेकिंग ऑन साहिल सर's पॉइंट, अगर पेपर पैटर्न चेंज होता है, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. ओके, दैट विल बी एन एक्सीलेंट थिंग, बिकॉज दैट मींस जो बंदा फिर मेंटली प्रिपेयर्ड है ना एग्जाम के लिए, वही पेपर निकालेगा, और कट ऑफ भी कम हो जाता है, और आपका मेंटल प्रेप एंड स्टेबिलिटी, आपका स्कोर इतना ऊपर लेके चले जाता है दैट इट ऑटोमेटिकली अ हिट. लाइक इफ यू जस्ट कंपेयर कैट 17 एंड कैट 16, जब पहली बार IIM बैंगलोर ने चेंज किया जो 3R पैटर्न, द कट ऑफ्स वेंट ड्रास्टिकली लो. बट पीपल हु वर मेंटली रेडी विद द प्रोसेस कि नहीं भाई मेरा प्रोसेस सेट है, मेरा स्ट्रेटेजी सेट है, कुछ भी हो जाए पेपर, दो सॉर्ट ऑफ पीपल जस्ट फ्लाई. ओके, I believe over here, whoever is there with that mindset, paper अगर change होता है, that's actually very good for you. डरो मत. You know, that's maybe you might be a IIM Shillong person, you can be IIM Ahmedabad. Okay, because that mindset will just put that jump. and जो डरने वाले लोग हैं, वो डर के नीचे गिर जाएंगे. इतना याद रखना. Super, great यार. बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं कमेंट के अंदर यार. I am also nostalgic. It's like the last पूरा साल पड़ा हुआ है, and I can see all these lovely messages which are coming all the way.
Thank you so much for your kind words यार. Thank you so much. I'm just taking screenshots right now और बाकी फिर मैं दोबारा एंड में दिखाऊंगा. अच्छा, ये just to add on to Sahil point, Sahil तूने बहुत सही बात बोली. देखो भाई, CAT exam is a 40-minute exam. It's not a bloody 2-hour exam. Me and Ankita ma'am were discussing this morning कि यार ये जो 40 मिनट अंदर जाके तेरे को उगलना है. Being honest, ये 40 मिनट का एग्जाम भी नहीं है. ये पहले 5 मिनट जो साहिल से ने स्टार्ट किया था और लास्ट के 5 मिनट का बात है. मतलब अंदर जाके ना जो ये वाला टाइम है ना, बीच के 30 मिनट, ये सबका सॉर्टेड है. फर्स्ट 30 मिनट पहले स्क्रीन का सेक्शन आएगा, वर्बल का आरसी आएगा, करना है नहीं करना, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें पूछ रहा है कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, विचार आ रहे हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या कुछ उस समय कंप्यूटर ठीक है कि नहीं है, जब तुम्हारा वर्बल सेक्शन स्टार्ट होगा. टुवर्ड्स द एंड हर सेक्शन के अंदर यू आर ऑलवेज वॉचिंग द क्लॉक. यार यहाँ पे मैं तो घड़ी चल रही, साइड के अंदर ऊपर घड़ी चल रही है, यहाँ पे टाइम कम हो रहा है, मेरा क्या हो पाएगा. ट्रस्ट मी बॉयज एंड गर्ल्स, यू गोना किल दिस ब्यूटीफुल एग्जाम. Focus on the last minute and the first 5 minutes as well. Sahil sir, you were talking about these last 2 minutes में उनको एक switch करना चाहिए ना, right? Correct. So I was saying कि last 5 minutes में कई बार ऐसा होता है कि we suddenly discover कि हमने number of questions less किए हैं, let's say. We suddenly discover कि what we were expecting, we have not done that. So we are not supposed to screw our exams in the last 5 minutes. Because if you have already made your 15 marks, that means you are already above your 90 percentile. Now, you cannot take that risk of actually going to negative and suddenly lower down your percentiles, because that is fine. Agar aapse jitna ho paya hai, that's fine, but you cannot actually screw your exam in the last 5 minutes. If you have last 5 minutes, that's fine. If you feel ki koi easy wala tita ya kaisa bhi ho sakta hai, you can fill the information, go for it. Otherwise, I think you should start preparing yourself for the next section, which is quants. Okay, and I think like that is the right strategy, because जरूरी नहीं है जैसा Moinack Sir ने बोला था कि हर सेट आप टॉप पे करोगे तो ही आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा आएगा. ठीक है, you actually get that leeway with one of the set, but इतना leeway भी नहीं ले लेना कि sectional भी ना clear कर पाए. इसलिए I told you like you should be able to clear your sectionals if you feel DLR is like very tough. Okay, but like don't ruin it by panicking in the last 5 minutes. Yeah. बहुत बढ़िया है. और लास्ट के 2 मिनट के अंदर सोचने, साहिल ये बहुत डीप बात है यार. टॉपर जनता हर सेक्शन में पहले 15 मिनट में जाके साहिल कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 या 4 90% Sir, I think like exactly one set, like for example if we are getting 4 sets, one set will have 5 questions, right? So 3 marks के every question set will be like 15 marks. Yeah. बहुत बढ़िया. तो 15 questions. तो लास्ट टाइम 90 percentile in CAT was 5 5 6. ये मैं बोल के पूरा साल इनको थक गया हूँ. तो साहिल बता, पहले 15 मिनट के अंदर ही 5 सवाल बना ले. मतलब 1.5 सेट ऑफ DILR, एक सेट एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, और यहाँ पे 1.5 सेट ऑफ RC और क्वांट के कोई भी जो तुम्हारे 5 या 6 सवाल बन सकते हैं विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 minutes. In short, you find an easier question in that, you're good, you're comfortable, you're beating the shit out of those 90% people or 3 lakh aspirant. 2.7 लाख लोगों में से तुम आगे हो गए पहले 15 मिनट के अंदर. अगेन इंडियन क्रिकेट टीम, अपना ओपनिंग बैट्समैन रोहित ने 100 मार दिए, तो नीचे जाके भी 100 मारेंगे. शुभमन गिल 50 10 पे आउट नहीं. पहले होता था इंडियन क्रिकेट में, तेंदुलकर ने 100 मारा तो हमारा वो कुंबले एंड में आके ना वो भी 5 बॉल 8 रन मारते होते थे. वो पुराने जमाने की बात है. अगर तेंदुलकर आउट हो गया, नीचे टक 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 सारे आउट. तो पहला वर्बल सेक्शन है, तो थोड़ा वहां पे ध्यान दीजिए. या साहिल, ओवर टू यू. करेक्ट. मैं तो बोलता हूँ 2003, 1999, 2007 वाली ऑस्ट्रेलिया टीम बनो. अगर आपसे एक्सपेक्टेशन है तो यू कैन डू इट. Okay, उनसे भी expectation होता था. They used to kill every match. You can also kill it. Okay. So now when we talk about QA, I think one very important thing is when you're done with LRDI, again you need to understand you're done with it. Okay, you can't repent upon it. अगर अच्छा हुआ तो you can't get very much excited because you have QA there. Okay. उसके बाद में get out of LRDI zone immediately so that you save your first 5 minutes, which are like very crucial. Second thing is always adapt that round robin strategy, which I always feel. अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इजी है तो डू इट राइट अवे. अगर लगता है कोई क्वेश्चन टफ है या मीडियम डिफिकल्टी है, आपसे नहीं हो पा रहा है, जस्ट क्विकली स्किम इट एंड लाइक गो अहेड एंड कम बैक एंड डू इट. ओके. अगर आपको लगता है दैट योर बेस्ट चैप्टर और मॉड्यूल हैज गिवन यू धोखा इन द एग्जाम, सो दैट इज फाइन. आपका कोई ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए. आज मुझे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन तो निकालना ही है, ऐसा नहीं. ऐसा एटीट्यूड अगर रखोगे और टाइम एंड वर्क सबसे टफ आ गया तो यू कैन नॉट एक्चुअली गो एंड स्टक ऑन इट, राइट? बिकॉज देयर माइट बी अ वेरी इजी प्यारा सा मॉडर्न मैथ्स का क्वेश्चन लाइंग समवेयर जिसको तुम देखना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो तुम्हारे लिए सबसे अहम क्वेश्चन निकला उस एग्जाम का. तो हो सकता है ऐसा हो, राइट? सो यू कैन नॉट हैव दोज ईगो क्लैशेस. And finally, I think you have seen
some of the live mocks solving strategies, how I actually used to attempt mocks and like get somewhere around like 18, 19, 20 correct. Okay, but ठीक है, अगर आप वहां तक नहीं भी जा रहे हो तो you just sort your 13, 14, 15, make sure you get a good 40, 45 marks out there and you're like nicely placed everywhere. And on the last you can see like you after VRC, DLR and QA, you are sitting in like one of those IIMs. So yeah, have fun, all the best. तुषार की जगह अंदर बैठ के तुम जैसे तुषार भी IIM कैलकुलेटर में बैठा है ऐसे तुम सेशन कर रहे होगे अगले साल. क्या बात है. So amazing. Great, yeah. This is so amazing. Okay, I'm getting a lot of good comments, boys and girls. Thank you so much. तुम्हारे बहुत amazing feedbacks आ रहे हैं. Thank you, Ankit. Thank you, everyone. मैं screenshots मार रहा हूँ, बाद में अपन share करेंगे. Keep enjoying. अच्छा, YouTube पे 1.2 thousand people have joined us. Boys and girls, stream को like कर दीजिए. We're going to have a lot of fun. बिल्कुल Travis head की तरह खेलो. क्या बात है, क्या बात है. Good. ठीक है, गुड. अच्छा, फटाफट लास्ट एक बात होता है. स्लॉट कौन सा है? तुम्हारा स्लॉट 1 है, स्लॉट 2 है, स्लॉट 3 है. वी गोना मूव टू प्रांतिक सर and then we're going to have Biswadip Sir also adding it up. Slot 1, slot 1, slot 2, slot 3. Poll कर दो भाई. Slot 1, slot 1, slot 2, slot 3, slot 3. Okay, YouTube पे भी slot 1, slot 1, slot 2, S1, 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 S3, S3. Okay, good. Slot 2, slot 3. बहुत बढ़िया. ठीक है भाई. बढ़िया. पोल अभी यहाँ छोड़ो. पोल क्या करोगे यार? ठीक है डन. Okay, great, great, super. लवली. लेट्स गो टू प्रांतिक सर. भाई बड़ी मेहनत करी है कैटकिंग फैमिली और ये सब लोग आए हैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए. मैं दोबारा बता रहा हूँ, IIM अहमदाबाद से लेके जैट टॉपर से लेके FMS से लेके IIM कैलकाटा सीमैट के भी टॉपर 99% सब बैठे हुए हैं यहाँ पे. ठीक है, तो इसलिए प्रांतिक सर जस्ट गॉट ड्रॉप्ड. आई थिंक वी गॉट बी वेटिंग फॉर प्रांतिक सर टू जॉइन इन बैक अगेन. ठीक है, और प्रांतिक सर भी थोड़ा गुल खिलाएंगे. विश्वदीप सर, डू यू वांट टू ऐड समथिंग टुवर्ड्स द प्रिपरेशन? सुधांशु सर इज ऑन द वे. ही इज ट्रैवलिंग राइट नाउ. मोस्टली शुड बी जॉइनिंग इन एनी मिनट. ठीक है, डन. विश्वदीप सर, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? Yeah, so I think before the exam as well, it's important कि आप you try to do like relax yourself, as in do something that you do as a hobby, basically to ensure that कि आप वो वाला time जो है you take your mind off the exam, because I know everyone is putting in a lot of effort, especially जो last वाला month होता है उसमें हम over and above जाते हैं just to make sure कि we are well prepared. But in that process, lot of the times it happens that कि we get burned out completely. But that should not be the case. तो इसलिए जो लास्ट के 2 दिन है, this it's not going to add anything that you have learned till now. ठीक है, आप जो पढ़ना था पढ़ चुके हो, अभी ये अप्लाई करने का टाइम आ गया. So this particular time you should ensure कि you are well prepared in terms of managing the entire paper mentally. तो उसके लिए बहुत important है कि you relax yourself. So do watch a movie, watch some motivational movie, or like spend time with your parents, spend time with your friends, take your time, mind off the exam for some time, because anyways exam वाले दिन वापस सुबह उठ के you will be in that mode. वो किसी को बताना नहीं पड़ेगा, it will automatically happen. So before the exam you should maintain that calmness, that you should take your mind off to ensure that you are fresh for the actual day. वो important है, काफी important. बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया. तुषार, व्हेन यू वर गिविंग एग्जाम थोड़ा पैनिक हुआ था उस दिन पे जब तू एग्जाम दे रहा था? ऐसे कुछ लुट गए बर्बाद हो गए टाइप फीलिंग आ रही थी कि यू आर ऑल गुड? हाँ सर, लुट गए बर्बाद हो गए फीलिंग तो देने के बाद भी आ रहा था. आपका वीडियो देख रहा था आते वक्त लग रहा था 98 99 के आसपास आएगा, बट भगवान की इससे थोड़ा सा ज्यादा आ गया. और एक ही चीज था सर, VARC में, जैसे मैं बार बार बोला कि VARC में मुझे लग रहा था ज्यादा आ सकता है, बट वहां पे वो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हिट, तो वहां पे वो इशू हुआ. बट वहां पे ही DILR ने वो कवर कर दिया. तो अगर पैनिक होके वहां पे गिव अप कर देता तो वो नहीं हो पाता. तो एक ही चीज है सर, पैनिक होगा ही, देयर इज नो अदर वे. 2 मिनट लो, सांस लो, पानी पियो, वापस लग जाओ. वो 2 घंटा वापस नहीं मिलने वाला है अभी 12 महीने के लिए. नेक्स्ट यही है, चांस करके आना है, बस इतना ही. क्या बात है, क्या बात है. नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे. और तुम भी ऐसे भी तेरे जूनियर्स बनेंगे और अगले साल इनको भी लाइव पे. आई थिंक यश भी ज्वाइन कर रहा है. यश इज द कैट टॉपर लास्ट ईयर, इफ यू रिमेंबर दैट. यश इज आल्सो इन द चैट. बहुत ही बढ़िया है और बहुत सारे प्यारे मैसेजेस भी आ रहे हैं. हाँ बिल्कुल. एंड देयर इज चैतन्य का मैसेज आया है, देन मोहम्मद का मैसेज आया, अजीत का है. थैंक यू सो मच सतविंदर एंड आप IIM कोहिकोड का सर ये दिखा रहे थे ना लास्ट इसमें मैसेजेस, उसमें एक बंदे का नाम था, वो भी मेरा जस्ट नेबर है, रहता है यहीं पे. कौन, क्या नाम था? वैष्णव. ओह इज इट? ओह अच्छा, IIM कोहिकोड के सेशन के अंदर होगा वो. ओके ओके. हाँ सर, तो वो अभी जोका में ही है, बाजू में ही रहता है जस्ट. तो बहुत सारे लोग वो कैटकिंग के ग्रुप से जोका में है और हम लोग सेम हॉस्टल में, सेम विंग के आसपास ही है. सुपर ग्रेट यार. इट्स गोना बी एन अमेजिंग जर्नी फॉर श्योर. ओके ग्रेट. माय लास्ट पार्ट फॉर द डे. और तुम करो भी बैठ के, मेरा ही दूसरा है शायद यहाँ पे. दिस इज आवर लास्ट ईयर. तुम पढ़ाई करो. जब तुम पढ़ाई करोगे ऐसे GDP की कॉल आएगी
मैनिफेस्ट करना शुरू कर लो. So here people come and write their. याद है तेरे टाइम पे तुषार पूछते थे 99.03, 98.9. महक खदेरिया भी यहीं पे है, महक तेरे पास जो है? कम नहीं है, क्या है हाँ, महक? जो कम है सर. बहुत बढ़िया. Convey my hi to her. Great यार, great. तो देखो उसका IIM कैलकाटा भी कॉल है, IIM कोईकोड भी कॉल है, and they are all यश दिमानी है 98.4, 97 पे फ्रेशर. जनरल नॉन इंजीनियर मेल को 97.74 पे IIM कोईकोड कॉल आ चुका है. तो ऐसे करके सेशंस होते हैं तुम्हारे सीनियर्स के साथ. ये सब होने वाला है, वो 10 से 11 बजे के सेशंस होते हैं. वी गॉट अ लॉट ऑफ फन. तो वो सब छोड़ो, अभी तुम कैट की तैयारी करो. जीडीपी वीडीपी संभाल लेंगे. क्यों भाई? जीडीपी संभाल लेंगे. अंकिता जी, तुषार जी, मोइनाक एंड साहिल एंड विश्वदीप सर, जीडीपी हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली. क्या बात है. और होगा ही सर, क्यों नहीं होगा. Just one thing I wanted to say कि irrespective of, just because I saw that screenshot अभी जिसमें general fresher and non-engineer engineer, मतलब वो mindset से मत जाना कि मैं engineer हूँ तो मेरे मतलब this is a weak section, this is a strong section, मैं non-engineer हूँ तो this is a weak section, strong section. Don't bring in that mindset on the exam day. Everyone is at the same stand. So, like coming back to what everyone's saying, ki if the paper is tough, it's tough for everyone. If it's easy for everyone, right? So, identify the easy kills, get the score, and just move on to the next question. That's it. That's so amazing. कहीं भी question पे stuck नहीं होने का. Great, यार. My final thought, and then we're going to go to Anisha ma'am. So just before, I think all of you guys, everybody has told you guys, stay calm, be relaxed on the day of exam, do what things you like. I think that's very important. You definitely have to be calm. You will perform your best. But when, we say do what you like, I think one thing I want to add to all of you is, Tushar mentioned कि कुछ लोग अलग-अलग से distract मत होना, लोग अपनी चीजें कर रहे होंगे, कोई घिस रहा होगा, कोई पढ़ रहा होगा. Don't do that. I think I want to say is do what you think works for you. If you are someone who till the last minute before entering the exam hall was used to, revising formulas, revising your notes, क्योंकि आपको बचपन से वो आदत थी कि जब तक मैं last minute तक वो नहीं कर रहा हूँ, confidence नहीं है कि मैंने अपना best किया है, please go ahead, do that. But when you enter the exam hall, just go with a very positive mind. I have done my best and write it down probably 10 times like हम mistakes लिखा करते थे बचपन में कि I will not do cheating, I will not do any mistakes. Write it down 10 times that I have done my best preparation. Today is my day and I'm going to crack CAT. So go with that much of positive confidence and you guys will all do well. And trust me, all of us out here are waiting to see you guys come to the GDPI sessions and come back like Tushar next year on the other side and give back to the rest of the world. Superb, yeah, superb. All right, my last slide for the day, and then we're going to let you guys go. It's such an amazing session. आज का YouTube live मैं करूँगा. I'm going to talk about admit card and some basic details. वो भी करेंगे रात को 12 बजे. Okay, my last thing, boys and girls. Prantik sir is not able to join, and Anisha, Sudhanshu का network नहीं है ना? देखो अगर phone पे connect कर सकते हैं तो. Sudhanshu sir is in train right now with a very bad network. He's traveling in Ranchi right now, and he's on the outskirts of Ranchi. So मुश्किल रहेगा अभी उनको लाना. But we'll do another session with him. ठीक है, चलो भैया. Sudhanshu sir के साथ एक और session कर लेंगे अपन. ठीक है. चलो भैया, last thing for the day. 3 चीजें आपको याद रखना है. ये तुषार तेरे को याद होगा, विश्वदीप सर 15 साल से मैं सेम ही चीजें बेच रहा हूँ. And so it's not a paid sponsorship by Red Bull. I don't get paid anything by Red Bull. Red Bull works really amazing. Snicker works really amazing. Hide and seek works really amazing. So the maths and the science behind Red Bull says that your activity after Red Bull is going to spike for nearly 1 to 1.5 hours. After that, there's a small drop, small drip. So CAT exam 2 घंटे का होता है. तो I'll be selfish, मेरा verbal section तो निकल जाएगा. उसके बाद सुधांशु और साहिल और विश्वा, इनका तुम क्वांट निकाल लोगे. But anyways, तो ये आपको Red Bull फटाफट एक ड्रिंक पी के, नहीं सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये ड्रिंक मार के करिएगा. I would say try this once tomorrow, how your body reacts to it. If you've been drinking it before, I love doing Red Bull. Please do that. मुझे फोन नहीं आना चाहिए सर, बोरीवली में रेड बुल नहीं मिल रहा है, अंधेरी में खत्म हो गया सर, वहां पे फ्रिज में, ये सब मुझे फोन आते हैं सुबह रात को. क्या करूं मैं, क्या अभी लेके रख लो. और जो बंदा वहां पे रेड बुल पी रहा होगा सेक्शन के बाहर, तुम्हें दिख जाएगा, ही इज पार्ट ऑफ द कैटकिंग फैमिली. नंबर 2, स्निकर्स बहुत अमेजिंग चॉकलेट है और कोई भी खा सकते हो. स्निकर्स के अंदर पीनट वगैरह रहता है, विच इज रियली अमेजिंग. तो स्निकर्स खाइए. और तीसरा वो ऋतिक रोशन वाला हाइड एंड सीक. यार बचपन में देखा ना, हमेशा टॉपर आदमी कुछ तो खा रहा होता है एग्जाम के अंदर, देखा कि तुम लोगों ने, है ना भाई. तो वो इसलिए हाइड एंड सीक भी खा सकते हो. डू, और सुधांशु का फोन आ रहा है, क्या बात है. सो डू ईट ऑल दीज थिंग्स, ट्राई इट आउट, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी विल आल्सो बी रियली हेल्पफुल.
तो मैं तब तक सुधांशु सर को भी स्पीकर पे लेता हूँ. सुधांशु सर, वी आर गोइंग लाइव, वी आर विद द फैमिली. कहाँ है भाई तू? Sir, actually, I'm traveling. I'm going back to Gurgaon. So, मेरा भी पेपर है 26th को. तू भी दे रहा है. तू अभी स्पीकर पे है. अभी मैं घर से वापस जा रहा हूँ. स्पीकर पे है, तू ध्यान से बात करना जो बात कर. इससे पहले सुधांशु में अपनी बातें शुरू हो जाएं. सुधांशु, any thoughts to all these people who are listening to us? Guys, I think we've interacted for one entire year, and I think all of you have prepared well. So I think last 1-2 दिनों में कुछ नहीं, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि ऊपर वाले को याद करो, घर वालों के पांव छुओ और निकल जाओ. I'm sure everything is going to fall in place. I think बहुत मेहनत सब लोगों ने करी है, बहुत sacrifices करे हैं, and I'm sure that it's going to come true. So God bless you all, to keep doing well, and I'm sure you're all going to shine very very brightly this season. क्या बात है, ये वही ना बात. सुधांशु, लग रहा है ना, मतलब फाड़ के आएंगे बच्चे. मुझे ऐसा लगता है सर, एक्चुअली मैं इस सीजन में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा करेंगे सब लोग. एंड आई थिंक बहुत दिल से सब लोग लगे हुए हैं इसके अंदर, ऑल द द एंटायर फैमिली. तो आई थिंक अच्छा तो होना ही वाला है. सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. हमने सबने चेक किया, हम सबने रिकॉर्ड ब्रेकिंग पढ़ा है. मैंने, विश्वदीप और साहिल ने भी, और एवरीवन है. तो तेरा रिकॉर्ड ब्रेकिंग पढ़ा है कि नहीं? इस बार तो मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग है. मतलब हर सीजन से बहुत ज्यादा इस बार हमने एफर्ट मारा है. तो आई एम होपिंग कि सब लोग बहुत अच्छा करेंगे इस सीजन में. एंड एक चीज और बोलूंगा, सब लोग अगर इफ यू आर एबल टू हियर मी, यार लोड मत लेना, हमने बहुत एफर्ट मारा है, बट तुम एकदम क्लीन स्लेट जाओ and enjoy the process. I think it's an opportunity that that not many people get. So I think you've gotten this opportunity, make it count, enjoy the day. Make sure that you treat it as any other mock exam, and सब कुछ अच्छा होगा, I'm sure. Yeah, वही ना बात. Sudhanshu, thanks for joining in, man. All the best, and I'll get the call with soon. Bye bye. Take care. Absolutely. All the best, guys. Take care. Bye bye. Take care. Bye bye. All right, boys, you got Sudhanshu joining in from phone. So, bhai, this is the part of the CATKing family. You guys have come a long way. Our YouTube family, CATKing family, jo bhi hai. Thank you so much, Sneha, for all your kind messages. You have been a continuous support. We have been a continuous support to you. तो बस एग्जाम के दिन जाना है अंदर, टेंशन फ्री होके जाना है, आराम नाल. मैं एक लास्ट लाइन बताना चाहता हूँ. एग्जाम के दिन एंग्जाइटी होती है, ठीक है? वो एंग्जाइटी तेरे हाथ में है, तो उसको पॉजिटिव लेगा कि नेगेटिव लेगा. वो 40 मिनट के अंदर तुझे अगर घर के सपने आ रहे हैं, मैं बर्बाद हो गया हूँ, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट आ रहा है, यू नॉट गोइंग टू बी सिटिंग इनसाइड लाइक मोइनैक सर एफएमएस के हैं, अंकिता मैम है, ये सब, मैं एसपी जैन हूँ, साहिल सर टॉपर है, विश्वदीप सर सीमेट. मोइनैक तेरा दिख नहीं रहा, तेरा कैमरा ऑन करना पड़ेगा. सो ये सब बैठे हुए हैं यहाँ. तुषार भी कलकत्ता के अंदर बैठा हुआ है. So just that anxiety of that particular time, my humble request is, so उस समय दिमाग को बोलना है, चुप, वापस आ, छुट्टी प्लानिंग कर रहे हैं, मैं घर जाऊंगा, मेरी नौकरी नहीं है अभी मेरे पास. वो सब फालतू विचार नहीं आने चाहिए तुम्हारे दिमाग के अंदर, और आराम से जानेगा, चिल करेगा. जो भी, अंकिता मैम तुम्हारा रोल मॉडल है. मॉक्स में नंबर आए ना आए, उस दिन 99 ला के अभी अंकिता मैम की नौकरी लग चुकी है. और अगर तुम्हें और कुछ मोटिवेट नहीं करना ना, मुझे छोड़ दो, मैं इन सबसे ओल्ड हूँ. थैंक यू सो मच शुभम, बहुत अमेजिंग मैसेज आ रहे हैं. मैं थक गया हूँ स्क्रीनशॉट ले लेके, इतना प्यार आ रहा है. बट एनीवे, सो मुझे छोड़ दो. ये मुझे छोड़ के कितने लोग हैं, 1 2, तुषार को भी इंक्लूड कर लेते हैं, चलो ठीक है. ये नियरली 3 करोड़ के आसपास खड़े हैं यहाँ पे. वो देखो, मोइनैक फ्लेक्स भी कर रहा है. ठीक है. और इंटर्नशिप फाड़ रहे हैं, ये 3 करोड़ के आसपास है ये कैमरे के अंदर. अब तू उसको स्ट्रेस लेके जाएगा, चिल जाएगा, मेरे को नहीं पता है यार, मेरे को नहीं पता है. एक और थोड़ी सी बात बताऊं, मैं एग्जाम दे रहा था, मैंने पहले बताई हुई है. तो एक लड़का ना हर एग्जाम देने के बाद यस करता था, यस, हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यस, हर क्वेश्चन सॉल्व, यस यस. मैं बोला भाई ये इतना यस कर रहा है, मतलब 100 सवाल थे और उसने 120 बार तो यस किया. तो मैं बोला मेरा कुछ हो ना हो, इसका कुछ. तो कई लोग वहां पे ओवर करते हैं बैठ के, ये तेरी की भैया ये वो करके टीका विका लगा के आएंगे. ठीक है, आप भी टीका विका लगाओ, तो डरने का नहीं उन सबसे. एंड तो अपना जानेगा, अपन ने पढ़ाई करी है, अपन ने भगवान के लिए, भगवान का आशीर्वाद दिया है, और सब कुछ बढ़िया होगा. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. एनी पार्टिंग थॉट्स, मोइनैक, अंकिता, एनी पार्टिंग थॉट्स, और तुषार और अनीशा मैम, ऑल गुड? We should all say, a lot of you guys have been sending so much love and thank you, and lots of we do have the other faculties whom you didn't meet them, some personal emergencies, but each one of them have wished all of you guys all the best, do well. And I think so much of thank you that you have given to all the faculties.
we really should be all thanking, I mean, from me and for quite a few others, all of us, even we were students of CATKing, like you guys. We were offline students studying in class, struggling after work to make it there. So thank you so much, Rahul sir, for motivating us to, you know, do an MBA, get there and get back. And today sit on this side being mentors to 1,000+ students. I think none of us would be here if it was not for you. So thank you so much for being that constant motivation and energy for all of us. I mean, it takes a lot of time, efforts to take 4 hours of sessions back to back. And the day we have to take 2 or 3 classes, it's like we are done and Moinack goes like, मैम 3 घंटे हो गए, बस हो गया, अभी अब मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, उठने नहीं हो रहा है, and you continuously keep taking 4 to 5 hours. So thank you so much, sir, for mentoring and being the motivation for all of us. Anytime. Pleasure is all mine. So boys and girls, make us proud. Thank you for your humble words. Boys and girls, keep working hard. ऐसा मुझे मेरी retirement क्यों feeling आ रही है? है ना भाई? I don't think, sir, none of these students would like you retiring. I'm sure everyone in the comment would also say that we want to see sir live every day, no matter where you are. बहुत ही बड़े 3-4 दिन हो गए लाइव नहीं किया, आज मैं करता हूँ रात को 12 बजे लाइव. ठीक है. God bless you guys and keep working hard. अभी कहीं जाने रहा हूँ मैं जीडी पे पढ़ा. मोइनैक जितना मर्जी वर्बल पढ़ा ले, मोइनैक मेरे पेट पे तो लात मारी ना, फिर देखना. All right, boys and girls, signing off. Thank you so much, Ankita. Thank you so much, Anisha. Thank you so much, Sahil, Tushar, and Biswadip Sir. You guys have been really, really amazing. And it was such an amazing session. People who are listening to us on YouTube, do it on the like button. And if you are a part of the journey, a small appreciation would be really, really helpful. I'll be there on the live session the entire day on CAT as well. और जो लोग CAT देके आएंगे, सुधांशु भी CAT देके आएगा, फटाफट मेरे को इनका फोन आएगा. And साहिल सर भी CAT देके आएंगे. I'll do a detailed analysis. और वो पक्का लाइव सुनना, it's going to be worth it. ठीक है. Bye bye guys, take care. Thank you everyone. Have a great day. Bye bye. Bye everyone. All the best guys. All the best, Best of luck. everyone. All Take the care. best, guys. Do well. Bye Tushar. Bye Bishwa. Bye everyone. Bye Take care. bye.